say something. I'll put on YouTube. Hello. Nikhil, say something. Sup. Seminar, it's a second year, which is built by the Krishna, Nikhil, and the other two team members. That happy launching. This is our the registration counter to handle by Krishna solely for the check-in and check-out. We prepare by the Krishna with the same code, but we struggling. Like last year, we did the event. That event we did it. Everything is manually. But this time, because of the Krishna and Nikhil, we did it online, everything. So people who register, they got the, when they register, that time itself, they got the booking voucher with the QR code. And now we are feeling very happy that what we made it, we utilizing in the real life. So they check in also, so all the people already check in. We feel very happy though what the system we made we utilizing in real life, even though inside the what the presentation they giving, that also built by us only. So it's a very good moment for us. So Krishna, I really appreciate the efforts you took from the beginning. Thank you. With the efforts took with the mostly with the Nikhil and other two guys we just joined. Yeah. So you guys, this Nikhil and you, it's a very nice feel to us. It means what we thought, what we project, we able to did it somehow. Yeah. So even though yesterday also, in morning also we got the one issue like that also we able to. You got a major issue. Yeah. So that's it. Okay. What Krishna, how's your experience? My working experience with us? is really good. I am feeling really blessed to come here. Yeah. I'm feeling, and especially you. Only saw on meeting, now we got to understand personally. It's so cool. How is really It really is. We thought you were like very strict and all, but now we know. It's nice actually. Yeah. But whenever like when you do something and it's the people using in reality, Then it is it's good. still obviously. And you see then your built website got $4,200 of revenue. Then that is also really good. Yeah, very good. Okay, thank you guys. This is all the report about the HSF event. This is Nikhil, this is Priyak sir, and this is me signing out. Bye bye. After completion of the event, now we're going back to the office. Somehow we managed to complete it successfully, and this was the venue for the event. This is the area of the hostel in which we are staying, and अब हम जा रहे हैं लॉ पसाट वहाँ पर खाना खाने. बस यही एरिया पुराना सा लगता है. देन आसपास सब दिस वन इज न्यू ओनली. ये है सिंगापुर का डाउनटाउन एरिया. बेसिकली 90% of the economy runs in this area only. All the expensive offices, everything is here. So this is Law Passat. Basically, so much of street food here at the same place, from different countries actually. So we had Indonesian food here. Let me show you. स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. और ये देखो, ये पर यहाँ पर है, ये पूरा एक बिल्डिंग टाइप है. इसमें खाने हैं, स्ट्रीट फूड है एंड अलग अलग कंट्रीज से फूड है एक साथ. एंड ये सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं. सिटी बैंक इज देयर, IOI, मॉर्गन स्टैनली, सब सारे बड़े ब्रांड्स. यही 95% सिंगापुर की इकोनॉमी है. यही है. हाँ, ऑलरेडी शो. हाँ, सब खा रहे हैं भाई. Already covered. We already buy the hour. This is our free food, huh? You should have taken more also. How much you will eat? This one we This brought. one we can. Later maybe we can. No, simultaneously we can eat because later you cannot eat there. So, but the location around so good. Surrounding buildings and here. This one, yeah, so good. बहुत बढ़िया है, मस्त एकदम. अभी ये इतने बड़े बिल्डिंग
और इधर खाना खाने जा रहे हैं हम. He is recording snaps. Always making the streaks and all. तो गाइस अब हम बस लेके आ गए हैं गार्डन्स बाय द बे में. और यहाँ पर सुपर ट्रीज हैं. ये मरीना बे सैंड्स का पीछे का व्यू है. एंड यहाँ पर सुपर ट्रीज हैं बेसिकली. ये वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सोलर पावर जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा लगता है. Super tree. Showing how the architecture looks. This curved. Oof. See? Oh my God. This is fun, no? This is fun. This is so much fun. We are going to the sky bar. Yo. Sky bar. Cool. Okay. So this was Selavi. This is a restaurant on the top of Marina Bay Sands. And यहाँ से व्यू देखो भाई, और प्यारा. और ये एक और रेस्टोरेंट था यहीं पर उसके बगल में ही. एंड यहाँ से भी व्यू टॉप नॉच. सो नाउ वी गोइंग बैक. And just to set the context, the Marina Bay Sands lift was so fast that our ears started paining. हाँ, आगे के क्लिप्स में हम बोराए नहीं है, ये हमारा असली का रिएक्शन है. But this was fun. No, it's fine. No. You see? Oh, okay. They're feeling it. The speed is too high, that's why. Oh, you see? Oh! Feel like it's gonna burst. Oh! Yeah, right? Suddenly. For you, it just kicked in. और फिर हम उसके बाद अगले दिन गए थे मलेशिया. एंड अब आता है मलेशिया वाला पार्ट. Next day. The next day we went to the Chinese restaurant and here we are just outside of the hostel in which we were staying. And this is the Chinese tea. और ये हम मलेशिया के लिए प्रस्थान करते हुए बस से जा रहे हैं. $15 लगे हैं यहाँ से. मलेशिया जौहर बारू नाम है उस शहर में हम उतर जाएंगे. जस्ट बॉर्डर पे है. आपको अभी दिखाते हैं इमिग्रेशन क्लियर करके कैसा होता है. इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की भाई, बिल्कुल दिल्ली वाली याद आ गई. यहाँ ये बोला जाता है कि ये वाला इमिग्रेशन पॉइंट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इमिग्रेशन पॉइंट है. सिंगापुर, मलेशिया. अभी हम सिंगापुर से मलेशिया आ चुके हैं. दिस इज हाउ मलेशिया लुक्स लाइक. वेरी गुड, क्लीन एंड एवरीथिंग ना. एंड हमने ग्रैब बुक कर लिया. अभी हम एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे. उसके बाद हम एक अरेबिक रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने. Here, drive car. No. No. You will get what you require the international license. परमिट और लाइसेंस. Driving. मस्त जगह है. मस्त कम. प्रयाग सर ऑथराइज्ड. मैदान सिलेरा. मैदान इज इन इंडोनेशिया. ऑल द मसाज सेंटर्स ना. भाई हमारे यहाँ नहीं होता है. When you are sitting on such a level, you don't even care. Why do you even care? And now Krishna, what you doing? He not shooting. He have team. Team editing. I think also he has team. He not shooting now. He have team. Of course,
you can have a team. You only can be 7 crore per month, yaar nahi. per month. 5 crores, Yeah, per month. nothing. थैंक यू। यहाँ पर खाना खाने आए। देखो भाई, ओ भाई देखो। सो यहाँ तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपने इंडिया में तो नहीं होता ऐसा। हाँ, दिस वन। देखो वो जो फेटा पहना है, हाँ वो देखो देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ओ वाओ, ये लुक एट दैट गाय। तो ये था अरेबिक रेस्टोरेंट जहाँ हम आए थे। एंड ऊपर देखो एक पार्टी हॉल टाइप का है। पार्टी हॉल। खाना भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। मैंने खाया था हमस एंड उसके साथ आए थे पीटा ब्रेड। ये है हमस, ये पीता ब्रेड और ये मेरी मैंगो लस्सी एंड ये है स्प्रिंग रोल। अब हम जा रहे हैं वापस सिंगापुर। अभी रात के लगभग 11 बज गए थे एंड अभी यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा लगता है एंड विल बी इन सिंगापुर।